Namaskar, I'm Ashok Vyas. Every day is a good day if everything goes well. And sometimes things are not working out at family front. There are situations which results into expression that is violent in nature. And we have seen in last few months, especially, or probably that has been happening. But there are many different news items that tells us due to differences resulting into violent expression on the part of husband, he ended up killing his wife. And that has happened in India, that happens everywhere. What is it that makes people behave the way they behave? We are talking on the theme Life Matters and how proactively aggression should be addressed. And I'm delighted to be welcoming Dr. Nalini Juthani ji. She is a psychiatrist and a teacher also. Mayuri Raman Nayan also joins us. She is into human resource, and of course, she is a mother and a wife, and I'm also a husband and a father. So basically, we come from family background, and anything where people have differences, people sometimes are unhappy with each other is all right. But let me request Mayuri to open the floor. Have you heard about situations where someone um, uh, manhandled, or rather, husband was beating his wife, or vice versa? Have you heard that personally? Thankfully, no. However, I would say that मेरा experience रहा है remand home में work करते हुए back in my school days, rather my college days, and of course in that situation, yes, uh, I have witnessed some examples where unfortunately the underprivileged people, especially people from kind of background of poor background, मैंने वो अनफॉर्चुनेटली महसूस किया है, देखा है कि जहाँ पर वाइफ्स जो हैं वो अपने पतियों के द्वारा मारी गई हैं, स्पेशली जब प्रताड़ित हुई हैं, और स्पेशली ड्रिंकिंग इश्यूज बहुत प्रोमिनेंट रहा उस रीजन में। तो मानसिक जिसको कहते हैं परिवेश अगर गलत रहा है तो उस सिचुएशन में मैंने जी हाँ मैंने इसका देखा है उदाहरण कई Yeah. दफा। So, thank you, Mayuri. And Mayuri, जो बात कर रहे हैं नलिनी जी, that relates to a particular class where we say कि वो illiterate हैं, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए ऐसा behave करते हैं. But recently, in just a week ago, there was a news coming from Pune where one guy who was in IT and his wife also in IT, यानी कि दोनों पढ़े लिखे, और उनकी शादी को सिर्फ 2 ही साल हुए थे, and he slit her throat. We are not getting into the details of that particular instance, but Nalini ji, before we look at such extreme steps taken, let us try and understand what is it that causes aggressive behavior manifested on the part of men or women in the family setting. Ashok ji, there is a human behavior which you will find in any part of the world. This exists between spouses because they are exposed to each other in many different ways. I have experienced and seen in my practice people who are doctors, lawyers, highly educated people who are victims of abuse as well as violence to an extent that they feel that they cannot get out of that situation. And those who are able to get out, they can be helped very well. Those who cannot, they suffer a lot. In my old days in India, it was very common to see in extended families, it was the whole family gets against that newcomer, the wife. And in very short period of marriages, many times
These women were set on fire. And this was not unknown many times in the villages where the customs are different, and it is the wife becomes the victim. So now, what we are looking at it is some measures that should be in place so that this can be prevented और सिचुएशन इस तरह एस्केलेट नहीं हो कि जो बिहेवियर पैटर्न है वो इस सीमा तक पहुंच जाए जहां किसी को शारीरिक रूप से नुकसान हो या जैसे कि हमने कुछ केसेस मैं अभी रेफर कर रहा था and Nalini ji, I find that these kind of cases are day by day increasing. तो एक्सट्रीम स्टेप्स लिए जा रहे सो प्रोएक्टिवली क्या किया जा सकता है उस पर बात करने से पहले थोड़ा और ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा होता क्यों है बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग मयूरी क्या कारण होता है जो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है और एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं दूसरों को भी एक दूसरे को भी बट दे एंड अप इन अ सिचुएशन जहां वो एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं क्या जनरली स्पीकिंग व्हाट डू यू थिंक कुड बी कॉजिंग इट how I think about this issue, अशोक जी, कि मुझे लगता है आपके जो सामाजिक परिवेश में आप रहते हैं, आप जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो आपके ऊपर काफ़ी काइंड ऑफ इम्प्रेशन छोड़ता है। अगर आपका चाइल्डहुड थोड़ा अगर कॉम्प्रोमाइज़ रहा है, ट्रबल्ड रहा है, जहाँ अग्रेशन काफ़ी ज़्यादातर देखा गया है, आई बिलीव कि कहीं न कहीं वो एक जो संकुचित फीलिंग है, बिहेवियर है, वो कभी न कभी पनप जाता है। अगर आप लव अफेक्शन से थोड़े से परे हैं और मुझे कहीं न कहीं लगता है कि कहीं न कहीं मीडिया का भी इसमें रोल है। अनफॉर्च्युनेटली हमारे जैसे भारत में बॉलीवुड मूवीज़ इतना रोमांटिक मूवी बनाता है और आपको एक ऐसा दिमाग में एक फीलिंग ला देता है कि एक रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, इतना रोमांटिसाइज़ होना चाहिए कि हाँ, हस्बैंड एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करे और वाइफ्स अलग तरीके से बिहेव करें। और जब वो नहीं देखते हैं उन चीज़ों को अपने साथ होते हुए, तो आई थिंक अगर उनका सोशल बिहेवियरल पैटर्न बचपन में या इवन अगर वो थोड़े प्रताड़ित एनवायरनमेंट में पड़े बले हैं, तो कहीं न कहीं वो इन सब चीज़ के चलते अग्रेसिव बिहेवियर की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। और एज़ आई वाज़ मेंशनिंग कि इतने ज़्यादा चीज़ों से आजकल मीडिया के थ्रू आप बहुत ज़्यादा वायलेंट चीज़ों को मीडिया बहुत दिखाने लगा है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्रेड गेम्स देखें या आप मिर्ज़ापुर प्रोग्राम देखें, ये सारी चीज़ों को इतना वायलेंस को इतना ईज़ी एक्सेस बना दिए हैं और बहुत ऐसा शो करते हैं कि हाँ, ऐसा होता है। तो जो परसेंटेज पहले छोटा हुआ करता था, वो अब बढ़ रहा है। और अगेन मेंटल इश्यू इज़ अनदर रीज़न आई थिंक बिग टाइम व्हिच इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इट। सो आई थिंक नलिनी जी या सो नलिनी जी जो बात मयूरी कह रही हैं उसको लेके अगर मैं वहां जाता हूँ जहाँ पे हम बात करें कि जो एक्सपेक्टेशन है एक दूसरे से वो कैसे निर्धारित होती है सो पार्टली व्हाट शी हैज मेंशन कि मीडिया कुछ रोल प्ले करता है फिल्में कुछ रोल प्ले करती हैं और पहले बात आई कि बचपन में उनको क्या एक्सपोजर मिला है दैट आल्सो प्लेस सम रोल बट इन जनरल पहले के मुकाबले में जो रोल एक जेंडर स्पेसिफिक जिस तरह से बना हुआ था वो बदल गया है कहीं ना कहीं ईगो का जो एक समझिए कि सेल्फ इमेज जैसी ईगो के साथ है वो भी बदली है just staying on this aspect of expectations from each other as per your observation वो क्या कैसे आप उसको डिफाइन करेंगी एंड व्हाट शुड बी द आइडियल वे टू काइंड ऑफ गाइड कि भाई प्रैक्टिकल वे में ऐसी एक्सपेक्टेशन हो जो कि एग्रेसिव बिहेवियर को प्रिवेंट करने में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके हाँ जी, aggressive behavior starts with anger, and that anger
starts because of the individual's personality, which is formed from the early childhood, the way they were raised, and how they developed anger so quickly that control of that anger is the number one thing before it goes to violence. मयूरी जी ने बताया कि जो जो अल्कोहल में पड़े हुए हैं, ड्रग्स में पड़े हुए हैं, जिनके घर में ये सब बहुत सा दिख रहा है, वो घर में ये सब होना बहुत ही ईजी है. इसमें बच्चे लोग पहले से ही सीख लेते हैं कि अगर मुझे ये नहीं मिला तो उसके लिए मुझे अग्रेशन ही करना है. So this is something that starts in every human being from a very early childhood. Then comes the time when they have some control. They are adults. If they are making money, they are drinking, they are using the woman as an inferior person, and they can control that woman through violence and through anything that comes in. Now, it becomes very kind of interesting to people when they see in the media, like in Bollywood, and rape and violence and throwing people from one place to the other means the young people with an immature mind do not know that you can really throw people like this, because this is all media, this is Bollywood, this is all in the background. And so all of these things play a very big role, but it has to be put together. The Bollywood is watched by a lot of people. Everyone doesn't fall into that. So those who are falling into it obviously have very immature, suggestible mind, and that's the bigger issue. सो बिगर इश्यू की तरफ जाने के लिए मयूरी जी, सेंसिटिव होना बहुत इम्पोर्टेंट है हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए. तो ये जो सेंसिटिव बनाए जाने के लिए एक तो जैसे हम परिवार में, जैसे आपने पहले एक्सपोजर का हम संस्कार शब्द लें, या बट समझिए कि टीनेजर हो गए हैं, तो आपको लगता है क्या एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ सेंसिटाइज करने का कि भाई बिहेवियर में रिस्पेक्टफुल जो टच है वो सिर्फ वही नहीं हो जहां पर कि आपको लगे कि अगर मैंने गाड़ी तेज चलाई तो कोई मुझे टिकट दे देगा, बट एक इंटरनली इस तरह का बिहेवियर पैटर्न डेवलप हो कि सेंसिटिवली और कंसीडरेट वे में दूसरे के साथ पेश आ रहे हो, वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल. उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कुछ किया जाना चाहिए एडिशनली? बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला अशोक जी, और मुझे लगता है ये बहुत बहुत ज़रूरी है आज के समाज में. जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट हुआ करता था, नैतिक शास्त्र, मॉरल साइंस. आई विश कि वो कंटिन्यूड होता. वो छोटी छोटी कहानियां आपको बताई जाती थी जिसमें ये सिखाया जाता था कि व्हाट इज एम्पैथी, व्हाट इज सहानुभूति, किस तरह से आप एक दूसरे को समझते हैं, एक सही परिवेश को आप लाते हैं. इवन बहुत ज़्यादा वो लड़के और लड़कियों का जो फ़र्क था उसको भी हटाने की कोशिश की जाती थी. अभी भी काफ़ी पीएसए, पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स बनते हैं, एड्स बनते हैं, बट कहीं ना कहीं उसका जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो गया है. और ऑफ कोर्स जो आपने कहा कि ऐसा जो टॉपिक्स है जहाँ पर इन सब बहुत छोटी सब्जेक्ट्स हैं, वो मतलब मैटर्स हैं, लेकिन उसका इवेंचुअली बहुत ही ज़्यादा असर हमारे युवा पीढ़ी पे, बच्चों पे पड़ता है. तो इसलिए यस ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जैसे मॉरल साइंस जैसे एक छोटी सी एक हमारे यहाँ उस समय जब छोटे थे तो समझ में लगता था, बोरिंग लगता था वो सब्जेक्ट कि क्यों पढ़ा रहे, ये तो मुझे पता है. बट कई बार इन सब चीज़ों को अगर हम रिपीट करते तो वो हमारे दिमाग में वो कहीं ना कहीं बिल्कुल संचित होते जाता है, और वो सही समय आने पे वो उभरता है. वो जब हम एक एनवायरनमेंट में जहाँ सोशल एनिमल की के तौर पे आप जब अपने मैनेजर से बात करते हैं, जब आप बॉस से बात करते हैं, तो आप क्यों नहीं चिल्लाते हैं? क्यों उस समय आपका परिपक्वता ये होता है कि नहीं, मुझे चिल्ला के नहीं बात करना है? तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एज मैडम ने कहा, नलिनी जी ने कहा कि किस तरह से एंगर मैनेजमेंट, वो कंट्रोल, ये सारी चीजों को अगर छोटे छोटे कहानियों की तरह हम समझाएं, बताएं, तो शायद
बेहतर होगा आज के इस नए दौर की के लोगों में। नलिनी जी, जो बात हम मयूरी जी से सुन रहे हैं, कई बार लोगों को लगता है ये सब इम्प्रैक्टिकल है, ये सब फॉर्मेलिटी की बात है। इनफैक्ट आई वुड नॉट हाइड, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कई बार कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज कर देते हैं इस तरह की नेचर की, जहाँ पर कि आप लेट्स से वी आर टॉकिंग जेंडर स्पेसिफिक, तो वो अ ग्रुप ऑफ बॉयज आर कलेक्टिवली मेड to learn through certain examples that how they should learn to have this model way of conducting while interacting with female. तो वो सारी चीजें आपको लगता है कि कुछ इफेक्टिव रोल उनका हो सकता है या होता है? आपका ऑब्जर्वेशन इस बारे में? आपने बोला वो जो एजुकेशन के लिए, आई कंसिडर दैट द एजुकेशन बिगिंस एट होम. दैट्स द वेरी फर्स्ट प्लेस व्हेन there are siblings, brother and a sister, and when the parent says you cannot hit, if you disagree you can talk, use your words, but you cannot hit, and that in eventually internalizes in the child. Then when the time comes to go to school, they do the same thing, and those who have not been trained well at home go to school and do the same thing. And that's where the parents teachers meetings will occur, and the teacher says your son or daughter hits everyone, and this is where it goes back to. Then we become adults and we do the same kind of a thing. And people who are in kind of settings where you can learn, many places people learn about how to communicate with each other, and this communication is a big time in work settings. People have those kind of seminars and workshops, but that's not the end. The end is where it occurs at home between the two most closest people. And in India now, you can hear this has gone further into hitting the parents as well. So this is not ending with only the woman or the wife, but it goes everywhere. And there are many things one can do when it comes to education. In United States, the education has gone to an extent that social workers come to the classes and teach the children how to behave, how to control your anger, and how not to ever take your hand onto anybody else. So we'll talk about it a little later, but that's the beginning. तो बेसिक जो बात आप कह रही हैं, उससे अगर हम एग्जाम्पल लें, गाड़ी चलाते हुए आपका ध्यान अगर थोड़ी सी देर के लिए भी मोबाइल फोन की तरफ अधिक चला गया है, गाड़ी आपकी ऐसी जगह पहुंच जाएगी जहां हो सकता है आप आगे कभी गाड़ी चलाने लायक ही न रहे, या किसी और का जीवन आप समाप्त कर दें, ऐसी स्थिति में पहुंच सकते हैं। पॉइंट ये है कि मोबाइल फोन का यूज गाड़ी चलाते हुए करने की तरह से अगर आपने माइंड का प्रॉपर यूज किसी के साथ बात करने में या अपना रिएक्शन एक्सप्रेस करने में नहीं किया और ध्यान हट गया एंड यू एंड अप बिहेविंग इन अ वायलेंट फैशन, तो एक तरह से एक संसार नष्ट हो सकता है। सो कीपिंग दैट इन माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट नलिनी जी। और जब सब कुछ ठीक ठीक चल रहा होता है तब हम इन बातों को ध्यान नहीं देते, इसलिए हम बात आज कर रहे हैं कि लाइफ मैटर्स। so, प्रोएक्टिवली कहीं ना कहीं हम इस चीज को आपस में उसको याद करते रहें। अभी इस तरह के केसेस पहले से बढ़ गए हैं या अभी ज्यादा न्यूज में आ रहे हैं? आई डोंट नो, हाउ डू यू फील नलिनी जी? इज देयर something in the collective psyche which is also probably somewhere related to the increasing level of impatience in the internet era? और दूसरा हम लोग अपने माइंड के साथ रहना छोड़कर या तो YouTube चेक कर रहा होगा, फेसबुक देख रहा होगा, व्हाट्सएप देख रहा होगा या किसी को कॉल कर रहा होगा। सो वी आर as a human race somewhere reaching to that direction where we are not comfortable with ourselves. We need to hang on to something.
that also probably somewhere underneath creates a sense of restlessness which we are not aware. How do you look at the role? Absolutely. Yeah. Absolutely. What you have described, the answer is all of the above. There is nothing that we are not doing. We are rapidly, everything is, it's a fast world. We want fast food. We want to do everything fast. That is why multitasking, because we are not satisfied with doing one thing. We have to be constantly all over the place. Now, such when our psyche, our concentration is not on one place, it goes all over the place, we are bound to make mistakes. When mistakes occur, then we become irritable, we become angry, and we start to do things. So if we are in a car and while looking at the cell phone, we are even trying to type, the legal system has to get involved. When legal system gets involved, people slow down a little bit. But if it is not, then you go and hit another car, or somebody is going at a speed, you start to show your fingers or do anything like that, because you cannot control, you have to do something. And the legal thing that we are doing now is in a way quite positive, because some people will do this only when they are afraid of the legal system. So So I'll interrupt you here. वो बात आपकी ठीक है, एंड एक डर जो है वो रोक देता है, मगर जब हम फिर से घर की सेटिंग में आ जाते हैं तो वहां पे कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है, उसको ये पता है कि और कोई देख नहीं रहा है, वेदर इट इज अ मैन और वुमेन, तो वो एक सेफ जोन है, इसलिए वो इतना अनसेफ हो जाता है क्योंकि वहां पर कोई अकाउंटेबिलिटी होगी या वो पता नहीं लगता है. सो नाउ लुकिंग एट the initial symptom where one of the two feels that he or she is likely to behave aggressively and it might hurt him or her. Mostly हम अभी हर की बात कर रहे हैं, तो फिर एक साइकोलॉजिकल और सोशल प्रेशर रहता है कि मैंने इसके साथ रहने का अपनी तरफ से कमिटमेंट किया था, अब अगर मैं इसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताऊंगी तो कई बार वो बताती नहीं है लड़कियां, एंड पहले ये शिक्षा भी दी जाती थी कि ससुराल की बात को घर में मत करना, हालांकि अब वो चेंज हो गया वैसे. सो टॉक टू मी अबाउट कि जब इस तरह का सिग्नल मिलने लग जाए, चाहे वो बॉयफ्रेंड के साथ रहे चाहे लिव इन रिलेशनशिप में भी है, बट शी फील दैट ही कुड हर्ट हर टू द एक्सटेंट ऑफ which might probably be threatening to her life, तो उसको क्या करना चाहिए, एंड इस तरह की सिचुएशन में जो लड़की होगी उसको क्या आप कहना चाहेंगी? number one, there are all over the world now, there are emergency phone numbers. Some of the places will provide you even a phone, so because you may not have it. Some of the predators would deprive you of phones, family contact, friend contact, any contact. So you have this emergency phone. Do not hesitate to contact. Do not consider that I'm doing this against my husband. And you just, at that point, he is not your husband. He is somebody who is going to kill you if you don't go and take that step. Many places, the people who have gotten hands together have found that the parents are not going to approve that, because my parents said, I have now sent you to your husband, you manage it. And that is now beginning to come to light, and parents are beginning to help. So before, that was a big problem. Now many of these women are not even aware that there are shelters, there are places where women can go and just leave the husband until a common ground comes, when things can be at a level when they can talk about it. I was very surprised in United States 52 years ago. The very first groups that I saw were available to Indian females were the ones for battered women like Sakhi. And many times in
our practice in psychiatry, we used to come across these women, and Saki was like a lawyer for them. They were legal help. So women have to first consider that I'm not stuck. I am going to get out of this. And they have to get out. And once they get out, then everything begins to fall in its place. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहले तो आइडेंटिफाई करना है, उसको रिकॉग्नाइज करना है, एंड यू नीड टू हैव दैट करेज, क्योंकि वो ऐसी जगह होगी वहाँ इफ यू डोंट आस्क फॉर हेल्प तो किसी और को तो पता नहीं लगने वाला है. एंड आई विल ऑल्सो ब्रिंग टू योर अटेंशन, मयूरी, दी Me Too movement, you heard about it, and that has resulted into United Nations observing 25th November as International Day for the Elimination of Violence Against Women. और उनका कॉल था यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स. तो वर्क प्लेस वाली प्रॉब्लम्स अपनी जगह हैं, और सिचुएशन जो घर में होती है वो अलग रहती है. बट दूसरा ये होता है कि जो एक सपोर्ट सिस्टम है उसमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहे, इस तरह की रिलेशंस हो कुछ लोगों के साथ, जहाँ की आप अगर आपने सखी या जो बाकी के ऑर्गेनाइजेशन, मानवी आई थिंक इज अनदर वन, एंड देयर आर फ्यू मोर, उसको नहीं भी आप अप्रोच करें तो एटलीस्ट देयर इज some bridge where you can pour your heart and seek guidance or help. या तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है, ये जो एनवायरनमेंट हमारा है अभी, उसमें इस तरह के रिलेशंस अभी तक हैं या वो पहले कम होते जा रहे हैं? हाउ डू यू फील? स्पेशली टाइम कम है, लेकिन मैं इसको जब हम भारत छोड़ के बाहर आ जाते हैं तो क्या सिचुएशन रहती है? मुझे लगता है अशोक जी कि जो पहले हमारे घर का एक वातावरण होता था, एनवायरनमेंट होता था, वो अब बहुत हद तक बदल गया है। स्पेशली आपने जैसे कहा कि भारत के बाहर अगर जब आ जाते हैं, आज हमारे पास व्हाट्सएप है और आज हमारे पास वीडियो कॉलिंग ऑप्शंस है कि आप अपने नज़दीक के लोगों से, परिवारजन से बात कर पाते हैं। बट एक समय था कि नहीं था ये अवेलेबल। तो सखी जैसे संस्था बहुत हेल्पफुल होते थे, अगर वो रीचेबल हैं तो। लेकिन एज़ यू सेड कि उस समय कई बार आपको पता नहीं है, आपके पास एक्सेस नहीं है, आपको उस तरफ नहीं एक्सेस मिल रहा है, तो आपको नहीं पता है। अभी भी मुझे ये लगता है कि ये सारी चीज़ें एक तरफ है, और परिवार में एक जो पहले का हमारा एक संबंध हुआ करता था कि आप अपनी बहनों से, अपने माता-पिता से, या कोई शायद बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, जिसे अपने दिल की बात आप 100% कर पाते थे, वो अब कहीं न कहीं कम हो गया है। क्योंकि शायद ये बिना जुड़ाव के, ये जो सोशल मीडिया जो है, जहाँ पर हमारे पास 1000 फ्रेंड्स होते हैं, बट टेक्निकली वो सिर्फ आपके पोस्ट को लाइक करने के लिए होते हैं, वो आपके दिल तक पहुँचने के लिए नहीं होते हैं। तो वो संबंध में जो एक ब्रेकेज आया है, वो आई थिंक कहीं न कहीं वो फिर से होना चाहिए। शायद एट टाइम्स आई आल्सो थिंक दैट वो खुद में इंट्रोस्पेक्ट हम खुद को भी करें, तो भी पता तो चलेगा कि हाँ, रिलेशनशिप कितने टूटते जा रहे हैं आजकल। मेरी जी, मुझे याद आया किसी ने कहा थी 2 पंक्तियां कि अगर दिल खोल देते यारों के सामने तो दिल नहीं खोलना पड़ता औजारों के सामने. वो कोई हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था, वहां उन्होंने कहा था. नलिनी जी, 30 सेकंड का समय ही है, कोई विशेष बिंदु आप समझते हैं इस संदर्भ में विच कुड बी हेल्पफुल फॉर अस? Yes, we have not touched the issue of sexual abuse. And that is very common amongst the, especially in the work settings. And there, instead of the husband, the controlling person is the boss. And the woman is not able to share that with anyone. Otherwise, she may lose her job, or it may become even more severe. So, sexual abuse amongst settings which are, again, they don't have to be poor, they could be in very high socioeconomic status, but they can't talk to anybody. And So, that is addressed. तो जो जो इस तरह के सिग्नल्स हैं उनको पहचान के जो प्रोएक्टिव एक्शन है वो लिया जाना चाहिए, बिकॉज लाइफ मैटर्स. एंड ये एग्रेसिव बिहेवियर को चेक करने के लिए कलेक्टिवली वी शुड हैव मोर कॉन्वर्जेशंस एंड शुड वर्क यूनाइटेडली. तो बहुत सारा धन्यवाद है नलिनी जी और मयूरी जी. ये विषय ऐसा है कि इसमें बातें बहुत सारी हैं जो कि इनकम्प्लीट रहने वाली हैं, पर सबके लिए मंगल कामनाएं. सब सुरक्षित रहें
और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करें।